Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We have been at this point of time discussing the core of marketing strategies or strategic marketing, which is purely the logic of the perspective of STP. And we had been talking about S for segmentation, T for targeting, and P for positioning. Now, all over research in successful companies, particularly in the area of marketing, suggest very strongly, and case studies also suggest the same, that positioning is the core of the success that companies achieve based on the target they have selected. For example, some time back, Crest toothpaste, which belongs to the P&G, Procter & Gamble, was one of the leading brands. But Colgate decided to launch a product which they positioned called Total. It positioned themselves as oral hygiene and kind of an antibiotic. Now, this positioning was very strong in the sense that it was supposed to provide antibiotic facilities in the oral hygiene. And since that strong positioning, which was very much supported by a strong marketing and communication campaign, and as an ingredient in that positioning strategy, they had got the permission from the Federal Drug Agency of America, which was considered to be the top agency in the world, which classifies various drugs and various medicines and approves them for use by people. And they actually force the companies to go into clinical trials, tests on human beings, and only then they approve the products as medicinal. Now, Total, therefore, was positioned as a medicine, but for oral hygiene. And as of today, they are the largest shareholder of the market. To be able to then understand the logic of positioning, we need to be very clear the preceding steps to positioning, and that we talked about. And I will just draw the strategy program so that we can recapitulate what we had been discussing in terms of selection of the targets and then deciding what the target would be and then trying to relate to our positioning. So briefly, if I draw this model, it will capture the whole logic that we have been discussing up till now. Now, in the first instant, we have talked about selecting the markets. Now, if I was to put this down, obviously selecting the market normally comes about from having already segmented the market and then taking a choice. But the choice will depend on 2 points. Number one, what we call opportunity and organizational fit. Now, we need to first of all make sure that we have an organizational and opportunity fit. Now, we have been talking about opportunity fit. That means we have to first understand the opportunity. We have discussed that. I will recapitulate it at a later stage. But then we also said that there has to be a match between the organizational capabilities and the opportunities. If there is mismatch, whatever the target we are selecting where an opportunity exists, we will ignore it because for one reason or the other, it does not fit with the organizational requirements. Now, the second part of it is, having determined that, we need to be clear that we have to develop the programs which are what we call the positioning programs. So we have to have programs that will help us to consolidate the positioning strategy in the market, and that is the programs which will take us into the market. Finally, all these things will obviously be targeted into, and we have been able to set the targeting situations, which is basically customer satisfaction. And you know that customer satisfaction is one of the major components
of all marketing strategies. The outcome that is required is basically how satisfied are the customers, which obviously will take us into the logic of brand equity, customer loyalty, customer retention, and all sorts of things. Number two, there are other objectives of the company. There are objectives like customer satisfaction objectives, ROI, ROA, all performance measures are put into the objective frame of the company. And logic says that all these strategies that we develop for marketing have to be able to achieve the objectives. Now, the core thing which will lead to all the other is obviously customer satisfaction, customer loyalty. If customers are loyal, logic will suggest that performance measures as you set them, irrespective of what they are, will be achievable. But like I said, marketing strategy, that the logic that we started was from S, T, and P. This is the marketing strategy format where segmentation, targeting, and positions are involved. Now, we have been discussing segmentation, but what we now need to do is to understand the issue of targeting. Now, targeting requires a few situations, and we need to be cognizant of the point. Before we go into it, let's look at opportunities. The opportunity comes from trying to find new classes of buyers. Fine, we can. That creates, for example, a new class of buyer means they have a specific need which is not being satisfied. Therefore, we can target that product into a group which has not been able to reach that product. It could be finding a new market. It could be finding a new use of the old product, so a class can be developed. Second is to find new needs. Now, new needs and wants, we have already talked about it, not really the very significant point, but opportunities can only be logical if we have the means to be able to satisfy them. If we cannot satisfy them, the opportunity will not exist for us. Now, opportunity and organizational match becomes one of the critical points which I have just pointed out to you, that unless and until the company has the resources, the capabilities to be able to successfully target into the opportunity, the logic of positioning will not be there. So first, before we even think about creating a positioning strategy, we need to assess whether we have sufficient sources or capabilities to be able to achieve that. Like I also said, that the capability and achievement is one aspect, but we also have to be very sure that the company objectives are met. Now, for example, this example I had given you already before, a coffee maker, which is supposed to be Starbucks, has consistently developed gourmet coffees, or which are brewed then and there. Brewing means it is made there, and they do not apply their capability into instant coffee market. Now, instant coffee market has been a place where growth is taking place substantially, where there are opportunities. Nescafe has been moving rapidly, has been buying or acquiring other companies which provide them a substantial growth opportunities. But Starbucks has not taken this into consideration. They are focused on their objective of staying as a freshly brewed coffee. Now, this is what I meant when I said that the opportunity has to be linked not only with the sources and capabilities of the company, but also with the objectives that the company has set for itself. Because objectives are the ones which will guide capability acquisition. If you recall our review, जहां हमने बात की थी कि जो ताकत या स्ट्रेंथ कंपनी की होती है, वो अगर ना हो तो कंपनी को अक्वायर करनी पड़ती है. और जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज, we need new strengths and new capabilities. But sometimes we make sure that the capabilities that we have are fully exploitable in the market condition. And that is what we try to do. Now, when we are talking about opportunity and organizational matching, we should not forget the logic that I had given to you of the key success factors. Now, if you recall my discussions of the earlier phase,
we had been talking about analysis, what we call the SWOT analysis, the strength, weakness, opportunity, threat analysis. I'd already explained to you that these are two distinct points: strength, weakness, opportunity, and threat. However, when we link them up, we are in a position to be able to do that. But while we were discussing SWOTs, or the format for doing it, considering that opportunities are externally available, whereas strength and weaknesses are internally targeted, and we try and find linkages. So the opportunity matching frame normally emanates or comes out of the SWOT analysis. But what we do not remember is that the key point in this is to be able to determine the key success factors of doing business in a particular targeted area. अगर आप थोड़ा सा भी पीछे जाएं और याद करने की कोशिश करें तो आपको क्या नाम है these things like internal factor evaluation or internal factor analysis or external factor analysis, जिसमें उनके मैचिंग से पता चलता है कि कौन से की फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी को अडॉप्ट करने होंगे अगर वो सक्सेसफुल होना चाहती है. अगर वो कंपनी के पास हैं तो दैट इज वेरी गुड, ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ. लेकिन अगर नहीं है तो ये वीकनेस है और इस वीकनेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स स्ट्रेंथ if you want to, or if the company wants to exploit that particular market. So the logic suggests that opportunity matching and opportunity analysis is a component part of targeting, because you need to be able to, having done that, you can come to say to yourself, okay, now I will target this particular segment, this particular market. Remember, I am assuming that we are very clear on the grounds के segmentations हो चुकी हैं. इसका मतलब है हमारे पास मार्केट के अंदर हमने segments बना लिए हैं. We have already ranked those segments in terms of the best segment for the opportunity availability, second best, third, fourth, so and so forth. Now we have to come to the decision as to which of the four do we choose. And I tell you that it is not necessary that the first would be the most important target for us, because it is possible that there is no match between the opportunity sitting in that first market and also the capability of the company. Now, this is not the only point that we need to think about. What we need to think about is, in terms of that target market that we are going to choose, what is the competitive environment there? Now, keep in mind that opportunities may exist in in markets, but then sometimes there are too many competitors moving into the same market. तो कई दफा लॉजिक ये कहती है कि जहां कंपेटिटिव सिचुएशन इतनी तेजी के साथ तब्दील हो रही हो, तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर बहुत सी कंपनीज उस मार्केट में घुस चुकी होंगी तो हमारा एफर्ट जो है वो शॉर्ट रन का होगा, क्योंकि दिस मार्केट विल क्विकली सैचुरेट इटसेल्फ. और जब सैचुरेशन आती है तो ओवर कैपेसिटी होती है. ओवर कैपेसिटी होती है तो नुकसानात होते हैं, एंड देन देयर इज अनदर फेज ऑफ सिस्टम्स टू मूव इन. ये डिस्कशन मैं थोड़ी तफसील से मे बी टुमारो व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग और द नेक्स्ट क्लास, तो वहाँ जब हम मैच्योर मार्केट्स और ग्रोथ मार्केट्स के हवाले से बात करेंगे तो मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा. लेकिन एज एन एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अमेरिका में जब पहली दफ़ा फाइबर ऑप्टिक्स की डिमांड क्रिएट हुई तो वो नई मार्केट थी, लेकिन उस मार्केट में तकरीबन 1500 से ज़्यादा कंपनीज अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रही थी इन द बिगनिंग पीरियड. तो जो पहले साल की बात थी उसमें जितनी भी वो कंपनीज थी, दे वर capable of making profits and they were able to set capacities. But within 6 to 7 years, the market had become oversaturated, because एक दफ़ा फाइबर ऑप्टिक बिक जाता है तो जो कैपेसिटी कंपनीज ने डेवलप की थी वो आइडल होना शुरू हो जाती हैं, और जब आइडल होना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि अब क्या करें. सो कीपिंग दैट इन माइंड, समटाइम्स द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग मार्केट विच मे गिव अ सिग्नल टू द बिजनेस मैनेजर्स कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है बिकॉज ग्रोथ बहुत तेज़ है, तो वहाँ ये भी देखने की ज़रूरत है कि वहाँ कितने कंपेटिटर्स हैं जो उस टेक्नोलॉजी
या उस कैपेबिलिटी को साथ लेकर आएंगे. और द अपोजिट साइड ऑफ द पिक्चर इज कि समटाइम्स जब ग्रोथ हो रही हो और वो जो जिसको मैंने कहा अपॉर्चुनिटी जहां नजर आती है, तो वहां कई दफा कंपनीज चाहती नहीं है बिकॉज दे आर नॉट वेरी क्लियर एज टू व्हाट्स विल हैपन इन दैट मार्केट. तो दो कंडीशंस हैं. जरूरी कभी नहीं होता कि आप जो टॉप रैंकिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट है उसमें एंटर करें. मे बी यू आर फिटिंग इन द सिस्टम, बट मैंने जैसे कहा कंपेटिटिव सिस्टम जो है या कंपेटिटिव पोजीशन जो है या जो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है वो देखना नहायत ज़रूरी होता है. और उसमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि इस मार्केट की एंट्री में बैरियर्स हैं कि नहीं हैं. इफ़ यू रिकॉल वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस लॉजिक व्हेन वी वर डिस्कसिंग पोर्टर्स इंडस्ट्री एनालिसिस मॉडल एंड वी वांटेड टू लुक एट कि बैरियर्स टू एंट्री कितने हैं और फोर्सेस कैसे ऑपरेट कर रही हैं. तो कीपिंग ऑल दैट पॉइंट इन माइंड एंड इसी वजह से माय लॉजिक इज कि हम प्रायोरिटीज तो रख लेते हैं, लेकिन एंट्री के टाइम पे वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस as well as the size of the opportunity in the market, as well as the competitive situation as it accrues, so that all three must tell us which is the logical area that we will go to. Now, having talked about this, we need to now figure out कि जो हमारी जो अपॉर्चुनिटी की एनालिसिस की जाती है उसमें किस किस्म के फीचर्स आने चाहिए. ऑब्वियसली दो तरह के होते हैं. एक क्वालिटेटिव फ्रेम में आता है बिकॉज हमने कहा कि क्वालिटेटिव असेसमेंट इज नॉर्मली डन बाय मैनेजर्स विदाउट कॉन्क्रीट डेटास. सो दे हैव टू लुक एट दे हैव टू गेस एट इट, जिसको हम मार्केट सेंसिंग बोलते हैं. और इसीलिए मैंने कहा था कि मार्केट ओरिएंटेशन जो एक लॉजिक हमारे पास आई हुई है, जो कंपनी भी ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड होगी वो लॉजिक में सक्सेसफुल होगी. और उसके सक्सेस के पीछे एक ही चीज क्या नाम है मुहर्रिक है. द वन दैट इज ऑपरेटिव इज नॉलेज ऑफ द मार्केट. सो दिस नॉलेज, प्लीज रिमेंबर, हैज टू हैव is more or less interpretive, though sometimes it is based on data. That means it has quantitative data, which means size of the market, number of buyers, pricing, revenue कितना generate होगा, और उसके बाद उसकी जो क्या नाम है मार्केट की जो पोटेंशियल है वो क्या होगी. ये क्वांटिटेटिवली डिटरमिन होते हैं, लेकिन उसमें ट्रेंड का एनालिसिस, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू मूव, व्हाट आर द कंपटीटर्स पोजीशनिंग्स, what and how will the market react to our position, they are all subjective, but they require market information, and we have talked about the market research capabilities that we need to have while we are doing all this. Now, attractiveness of the business, like I said, does not only depend on the size or the opportunity that exists. I said it is what kind of value can be created in the market, and what are the competitors doing in it, and how would the organizational capability fit in the system. So keeping these things in mind, we have to have a method, regularly developed method, to evaluate our opportunities in the market. Now, what are the decisions which are part and parcel of the targeting situation? We need to quickly cover them and try and find out कि targeting decisions जो लिए जाते हैं उन पे कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं. कुछ तो मैंने अभी आपको सामने जिक्र किया. मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि उस पे इन्फ्लुएंस है नीड्स कौन सी हैं और कंपनी की कैपेबिलिटीज या अपॉर्चुनिटी सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ्स क्या हैं और कंपेटिटिव जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है. लेकिन दीज आर वर द बिगिनिंग थिंग्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. बट वी नीड टू रिमेंबर कि इंडस्ट्री की जो या इन्वायरमेंट की या मार्केट की जो टाइप है वो भी क्रिटिकल होती है टारगेटिंग के अंदर. फॉर एग्जांपल, और फिर उसका पोजीशनिंग में आता है. मिसाल के तौर पे इमर्जिंग मार्केट की मैंने अभी जिक्र किया. फ्रेगमेंटेड मार्केट्स होती हैं, कई कंपनीज फ्रेगमेंटेड मार्केट्स में एंटर करती हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सो एंड सो फोर्थ. सो मार्केट की जो इन्वायरमेंट है या उसकी जो कंडीशनैलिटीज हैं वो भी हमारी नज़र में होनी चाहिए, अदर देन ओनली लुकिंग एट द पॉइंट ऑफ द नीड्स एंड द companies' capabilities as well as the the environmental frames that are operative, particularly the competitive situation. Now,
कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं, तो मैंने कहा इन्फ्लुएंस करती हैं टारगेटिंग डिसीजंस को। उसमें ट्रेंड्स हमें नज़र आते हैं चंद जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं इन दीज डिसीजंस। अब डिसीजन क्या है कि हम एक टारगेट को सिलेक्ट करें या जितने भी हमने सेगमेंट बनाए थे उन सारों के पीछे हमारा क्या नाम है जाना का मकसद है, या वी शुड पोजीशन आवरसेल्व्स अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, शुड वी सिलेक्ट वन, शुड वी गो फॉर टू और थ्री एट द सेम टाइम, एंड द नेचर ऑफ के पहले किस सेगमेंट में जाएं और बाद में किस सेगमेंट में जाएं। नाउ दीज आर द फ्यू टारगेटिंग डिसीजंस व्हिच आर क्रिटिकल। लाइक आई वुड रिपीट इट अगेन कि हमने सेगमेंट्स हुए हैं, 5 हैं, 6 हैं, हमने उनको अलाइन भी कर लिया, प्रायोरिटीज भी देख ली और ये भी देख लिया कि all of 4 or 5 of them are suitable from the company's capability point of view. So hypothetically, we have the capabilities, we have opportunities, obviously opportunities best, second, third, fourth के हिसाब से, फिर competitive उसमें जो एक्टिविटी है वो भी नोट हो गई। अब डिसीजन लेना होता है कि ये पहले हम फर्स्ट टारगेट मार्केट में जाएं, अगर सारी चीज़ें हमारे हिसाब से उस टारगेट मार्केट को अटैक करने के लिए या उसको अप्रोच करने के लिए वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, या सारे टारगेट्स को एक साथ ही सिलेक्ट कर लिया जाए और एक किस्म का क्या नाम है टारगेटेड मार्केट्स हों, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग हो रही हो और हम हर टारगेट को सेपरेट पोजीशनिंग के तौर पे चले जाएं ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि पोजीशनिंग का क्वेश्चन है और सिलेक्शन ऑफ द मार्केट है। अगर हम एक टारगेट सिलेक्ट करते हैं तो वी आर गोइंग इनटू कंसंट्रेटेड मार्केट, वन टारगेट वन मार्केट। बट अगर हम सारे सेगमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और हर एक के लिए एक नई पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी ले जाते हैं तो फिर वी आर डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में हम आ चुके हैं और हम अपने प्रोडक्ट्स और पोजीशनिंग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अक्रॉस द होल segments that we have. However, we might believe that we can approach this whole segmented market by one positioning strategy. ये किस वक्त, अब ये हर एक का अपना लॉजिक है और हर एक के पीछे अपनी कंडीशनैलिटीज हैं और इसीलिए मैंने कहा इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेट करते हैं डिसीजंस को। दे आर नॉट सिंपल डिसीजंस। कई दफ़ा फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि मार्केट सेगमेंटेड तो हैं, नीड्स भी डिफरेंशिएटेड हैं, यानी कि वी कैन सी वेरियस नीड्स ऑपरेटिव, बट हमें कहीं क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही होती कि ये जो मार्केट में प्रेफरेंस है, प्रोडक्ट प्रेफरेंस है, वो क्या एग्जैक्टली नीड के साथ अलाइंड है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि एक मार्केट है, कई लोग इंस्टेंट फोटोग्राफी चाहते हैं, कई लोग क्या नाम है उस पे पिक्चर लेना चाहते हैं ऑन फिल्म के ऊपर, कई वीडियो बनाना चाहते हैं। व्हाट इज द लॉजिक, प्रेफरेंसेस हमें अब नजर नहीं आ रहा कि कैमरा कौन सा प्रेफरेबल होगा। वुड द पीपल वांट ऑल फीचर्स इन वन कैमरा, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही एक्सटेंसिवली बढ़ जाएगी, या ऐसे यूनिट बनाएं जिसके अंदर बाय अटैचमेंट्स, बाय एडिंग अ न्यू फीचर वी कैन अपग्रेड द कैमरास। तो जब प्रेफरेंस क्लियर ना हो तो लॉजिक कहता है कि आप इनिशियल स्ट्रेटजी में एक ही स्ट्रेटजी लेकर जाते हैं और आप सबको टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि सारों की नीड मीट हो, पार्शियल मीट हो, और जब वो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है प्रेफरेंसेस के अंदर, एक्चुअल प्रेफरेंसेस के अंदर, तो फिर आप सेगमेंट्स को एक्चुअली टारगेट करके पोजीशन करके अप्रोच करते हैं। तो जैसे मैंने कहा डिसीजन है कि टारगेटिंग में हम कैसे अप्रोच करें, टारगेट को कैसे अप्रोच करें, एक ही प्रोडक्ट से करें, या अगर हमें बहुत क्लियर है कि इस मार्केट की प्रेफरेंस स्पेसिफिकली एक ही चीज है तो हम उसको फोकस्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू, पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू हम अप्रोच कर सकते हैं। टिपिकली अगर मैं ये बिजनेस एजुकेशन के अंदर जाऊं तो वहां भी ये इशू है, बिकॉज वी डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड डिमांड इन द मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स। तो लाइक एमबीए, अगर हमें स्पेशलाइज्ड एमबीएस की ज़रूरत अभी क्लियर नज़र नहीं आती बिकॉज मार्केट इतनी क्लियर नहीं है, हालांकि नीड्स हैं तभी हम स्पेशलाइजेशंस ऑफर करते हैं, मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइजेशंस ऑफर करते हैं, फाइनेंस में। बट अगर आप थोड़ा सा गौर करें
तो ये जर्नल एमबीए के नीचे स्पेशलाइजेशंस हैं। बाहर अगर आप चले जाएं, पर्टिकुलरली इंग्लैंड वगैरह में, तो वहां मार्केटिंग का मास्टर्स होगा, मास्टर्स इन मार्केटिंग, विच मीन्स दिस पर्सन इज टोटली रिलेटेड टू द मार्केटिंग एरिया, और ये फाइनेंस या किसी जर्नल एरिया में इसका फिट करना मुश्किल होता है। रीजन, कंपनीज प्रेफर करती हैं, इसलिए हमारा ऑफर भी उसी तरह का होता है। पाकिस्तान में वी नॉर्मली ऑफर अ जर्नल एमबीए विद फैसिलिटेशन के हम उसमें उनको कुछ इलेक्टिव्स दे देते हैं, जिससे थोड़ा सा वो फोकस्ड हो जाते हैं एक पर्टिकुलरली एरिया में। तो एक छोटी सी एग्जांपल है टू शो कि हाउ एंड द रीजन व्हाई प्रेफरेंसेस अगर क्लियर ना हो तो हाउ डू यू अप्रोच द मार्केट। अगर प्रेफरेंस बिल्कुल क्लियर हो हमारे पास कि इस मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही नौयत का विद दिस कैपेबिलिटी चीज चाहिए, तो हम फोकस में चले जाते हैं। और अगर हमारे पास एबिलिटी हो कि हम हर सेगमेंट के लिए एक खास पोजीशन, प्रोडक्ट और उसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम हर सेगमेंट की रिक्वायरमेंट को वैसे ही पूरा करेंगे जैसे फोकस स्ट्रैटेजी में होगा, तो हम डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में चले जाते हैं, एंड वी हैव द एबिलिटी टू डू दैट। अब यहाँ इसी को अगर मैं लिंक करूं ट्रेंड्स को, जो अप्रोच आ रही है, तो वहां हम देखते हैं कि जो इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, particularly emerging markets के अंदर, we normally tend to approach the whole market because we think there are different needs होंगी, because अभी तक हमें clarity नहीं है, लेकिन preference clear नहीं है initial stages में। introductory stage के अंदर preferences तो clear नहीं है, लेकिन हमें अंदाजा है कि needs में फर्क होगा, तो उस वक्त हम एक ही प्रोडक्ट से एंट्री करते हैं। therefore we consider that as macro segment. Now watch the word macro segment. Theoretically, we are differentiating it from micro segment. Micro segment is when you can break the market based on needs and wants in specific categories. But if we are not clear about the preferences, so we might call that as a macro segment, and we approach it and allow the market to slowly over time break into its preferred areas. वहां हम माइक्रो सेगमेंटिंग में आ जाएंगे, जिसमें हम नॉर्मली कस्टमाइजेशन में चले जाते हैं। सो इफ वी कीप breaking the market into smaller micro segments, we are actually moving from a mass marketing area to customized marketing area where everything is targeted to satisfy a single individual. And typically, if you recall, Dell Computers was the pioneer in the area of establishing a customized marketing for the computer market, the people who wanted computers, and their original targets were organizations, but then that same facility became available to individual buyers, and they could sit on the computer, give their own orders by assembling their own attributes in the product that they wanted, and we saw that they were very, very successful. However, when the market which starts in the emerging area, and you can apply your logic of going through a mass marketing concept, which basically means using the whole market as a macro segment, and then let the market move through its various cycles, reach the maturity cycle, where we know that micro segmentation starts, and we know the market has saturated, there are no new opportunities moving in, the whole market has already been divided into its most profitable, opportune areas. The competition here and the way to position yourself will obviously be different than when you are in an emerging market condition. So we will be discussing that subsequently. However, one thing we need to remember that emerging markets, कई दफ़ा हमें जब हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं तो नॉर्मली निश मार्केट्स होती हैं जो कि इमर्जिंग होती हैं, और यही निश मार्केट्स जो हैं ये बाद में ग्रो करती हैं. सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट वी नीड टू रिजॉल्व हियर. एक तरफ हम कह रहे हैं कि मैक्रो सेगमेंट बनाओ क्योंकि हमें प्रेफरेंसेस समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है कि नीड्स फर्क होंगी, लेकिन प्रेफरेंस नजर नहीं आ रही. दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि निश मार्केट है तो वहां लॉजिक कहता है कि प्रेफरेंस होगी, लेकिन निश मार्केट्स नॉर्मली टेंड टू ग्रो इनटू लार्ज मार्केट्स
mass markets बनती हैं over a period of time. So thinking that these two conditions can overlap under certain frames, तो हमें ये दोनों चीज़ों को याद रखना चाहिए, and let's not confuse the issue of the strategic approach to these areas. एक तरफ हम मैक्रो मार्केट की बात कर रहे हैं जहां preferences are actually diffused, यानी clarity नहीं है. Needs and wants can be segmented, they can, but preference का पता नहीं है कि किस तरफ को market move करेगी in the final systems. ये emerging markets हैं. दूसरी तरफ niche market भी emerging market कहलाती है, लेकिन फर्क है. Emerging market normally is the result of technological innovations where you are expecting a new area to emerge and a new market to be created over time. Niche market, on the other side, is within an existing product market scope, और वो scope है जहां अभी तक competitors उसमें move नहीं किए हैं और वो need जो है वो unsatisfied आ रही है. तो let's distinguish the two major frames, but logic दोनों की एक ही है कि macro market जो है वो भी finally micro में चली जाएगी और niche market भी grow करते हुए, अगर growth उसके अंदर potential है, grow करते हुए वो भी micro markets में चली जाएंगी. So the approach to micro level will be the same. However, they come from two distinct points. One is technological growth frame where technology has moved in. The other is a market need frame where the need was not being satisfied under certain conditions, and therefore the marketer decided to find that market and then try and provide satisfying solutions to it. Now, हमें पता है कि जब हम मार्केटिंग में जाएंगे तो नॉर्मली वी विल हैव टू पोजीशन आवर प्रोडक्ट्स. अब सवाल ये है कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं. हमने जिक्र किया चंद चीज़ों का और इसके लिए मैं आपको रेफर भी करूंगा माइकल कॉटर की बुक में, जो उनकी मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक है. वहाँ अगर आप सेगमेंट टू सेगमेंट या मार्केट टू मार्केट अटैक प्लान देखें तो वहाँ आपको एक पिक्चर जो है वो खासी क्लियर हो जाएगी कि हाउ डज द लॉजिक ऑफ सिलेक्टिंग एंड मूव. मैंने आपसे कहा था कि हमने सिलेक्ट करना है कि पहले कौन से टारगेट है और फिर किस दूसरे टारगेट पे जाएंगे या सारों के साथ एक ही दफ़ा ट्रीट करेंगे. तो ये जो दो लॉजिक्स हैं ये मैं इस पे क्या नाम है आपको डिज़ाइन पे क्लियर कर देता हूँ. इसमें कॉटलर की बुक ज़रूर चेक करने की ज़रूरत होगी जहाँ उन्होंने सेगमेंट टू सेगमेंट अटैक प्लान के तौर पे जिक्र किया और मैं उसको आपके सामने I'll try and draw this so that you will be able to understand how we can move. Now, keeping this thing in mind, on this axis we have the market and on this axis we have the products. So on one axis we have the market and on the other we have the product. And let's assume hypothetically that we have three segments, A, B, C, the various market segments, and we have also planned three types of products that we can launch across this system. And now we have to decide how to go about it. Now, what I'm saying is that product one can be launched in product A in time 1. So we can put down as type 1. Now, it is also possible that time 2 may we decide to move to market B as well as market C. So time 2 and time 2 में हम दोनों markets में चले जाएं. Think that we already have one product which is in T1 and then we launch the second into the next segment and in the third segment over a period of time. But at the same time, we can also decide that time 1 may we would be launching in product time 1 may we launch product number 2 in 2 market, that is the B2 market. Now, if we complete this whole market and put all the products totally in all of them at a point in time, so we have actually penetrated this B market with all types of product
across time frames. It was also possible that we may not take the the product 1 into market segment C और इनको हम छोड़ दें for a simple reason that we watch competitive rivalry here to a logical extent कि हम इन areas के अंदर जा नहीं सकते हैं. So keeping this in mind, we can draw up a map by which we should be able to see how can we plan this. This, if you go to Michael Kotler's book, you will find this attack plan or how to penetrate using what product at what point of time into the various market to be able to clearly establish the logic of this approach, which I'm just suggesting by drawing a framework. Now, problem जैसे है कि ultimately do we cover all the market or we just cover a few, and problem of the decision will obviously, like I've already told you, will depend on not only the market environment but also in terms of the competitive situation, the trends that are moving in, how long the opportunity will last over a period of time, and so on and so forth. But हमारा issue क्या है? कभी-कभी वो मैं I will just try and clear this confusion. Sometimes when we watch products moving into the market, तो कई दफ़ा हम सोचते हैं कि ये differentiated marketing हो रही है, in the sense जैसे मैंने कहा differentiated marketing उसी वक्त होती है जब आपका हर प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक टारगेट पे मरकूज हो और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस मार्केट की वो पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू मीट हो रही हों. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई दफ़ा एक ही मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, हमें एक किस्म की वैरायटी नज़र आती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वैरायटी जो है ये डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग हो रही है, विच इज़ बेसिकली लिंक्ड विद मार्केट का एक टोटल नीड एंड प्रेफरेंस का सेपरेट होना, और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक ही मार्केट है, उसके अंदर सेगमेंट है और उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं या वेरिएशंस लॉन्च की गई हैं, तो हम क्या वैरायटी ऑफर कर रहे हैं. होता क्या है, जैसे मैंने कहा, इसमें इशू खास तौर पे प्रेफरेंस का है. मार्केट के अंदर जब हम कहते हैं कि ये पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी जो है फोकस्ड है और डिफरेंशिएटेड है, तो इसका मतलब है नीड और प्रेफरेंसेस क्लियरली नज़र आते हैं और प्रोडक्ट जो है कंपनी का वो उनके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है. लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर प्रेफरेंसेस हर नीड का हर मार्केट सेगमेंट के अंदर नहीं क्लियरली नज़र आ रहा, तो फिर हम वैरायटी मार्केटिंग में चले जाते हैं. इसके लिए थोड़ा सा आपको यू विल हैव टू रिकॉल द लॉजिक ऑफ सेगमेंटेशन. नाउ अगर आप वापस हम जाएं सेगमेंटेशन के अंदर, तो हमने दो बातें की थी. एक है सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना, उसका मतलब है साइकोग्राफिक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हम उनको सेगमेंट कर देते हैं यूजिंग वेरियस मोटिवेशनल एंड साइको एनालिटिक टेक्निक्स. लेकिन फिर हम उनको डिस्क्राइब करते हैं ईच सेगमेंट को. अब जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसमें जो मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो सेगमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं. अब मैं यहाँ कंफ्यूजन जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू आपके सामने रखने लगा हूँ, एंड सी वेदर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. क्लॉग की सीरियल मार्केट है. नाउ सीरियल मार्केट जो है जहाँ सीरियल्स बेचे जाते हैं, उसमें जो टारगेटेड डिस्क्रिप्शन है ऑफ द सेगमेंट और द होल मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप, उसमें द मदर इज द बायर, actual consumers are the child, the mother herself and the husband. So the whole family is consuming, लेकिन खरीदार जो है वो माँ है. अब चूंकि क्लॉग सीरियल की मार्केट है, अब आप सीरियल्स में देखें तो वहाँ बेतहाशा वैरायटी पड़ी हुई है. चॉकलेट, चोको क्या नाम है वो हैं, शुगर और क्या नाम है विदाउट शुगर कंटेंट के सीरियल्स हैं, ओट सीरियल्स हैं, राइस के सीरियल्स हैं. सो देयर इज अ वास्ट वैरायटी. आप किसी भी दुकान पे अपस्केल किसी भी आउटलेट पे जाएं तो वहाँ आपको क्लॉग ही के हवाले से
बेतहाशा प्रोडक्ट्स पड़े हुए नजर आएंगे। और उसी तरह से फौजी जो हैं आपके सीरियल्स वाले, उनके भी प्रोडक्ट्स होंगे, एंड देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच आर डूइंग द सेम। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को उठा के आप किसी भी एक खास टारगेट के साथ उसको लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि टारगेट इस वक्त एक माँ है जिसने ये प्रोडक्ट खरीदना है। और इसलिए वहाँ हम कहते हैं कि ये टिपिकल एग्जांपल है वैरायटी की। इसी तरह से वॉचेस में अगर हम चले जाएं तो टाइटैन वॉचेस जो हैं उन्होंने इस किस्म की एक वैरायटी फ्रेम दिया हुआ है। अगर आपने उनके एडवर्टाइजमेंट्स देखे हों तो एक एडवर्टाइजमेंट में एक थाली में उनका जो वो होता है, लेट्स से द अटेंडेंट, वो एक थाली में एक क्या नाम है मॉडल के सामने एक ट्रे लेकर आता है जिसमें 15-20 घड़ियां पड़ी होती हैं, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू गो फॉर अ पार्टी, और वहां वो एक घड़ी उसमें से चुनता है। क्वेश्चन ये है कि ये पोजीशनिंग हमें समझ आ रही है कि वो पोजीशन कर रहे हैं अपने वॉच को एज मल्टीपर्पज वॉच, लेकिन चूंकि कैटेगोरिकली एक घड़ी को हम किसी एक ओकेजन के साथ या किसी एक सिस्टम के साथ लिंक नहीं कर सकते, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग हायर लेवल ऑफ वैरायटी। Now, variety therefore must be differentiated from differentiated marketing. और उसकी लॉजिक ब्रॉडली, उसकी डिटेल्स में अगर आप कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें तो वहाँ ये डिटेल्स ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन उसमें है यही, नीड एंड वांट सेपरेटली नज़र आ रही हों और प्रेफरेंसेस भी क्लियरली समझ आ जाएं। और जब आप प्रेफरेंस को अप्रोच करें तो जो प्रोडक्ट आपका है वो उस प्रेफरेंस के साथ कंप्लीटली मैच कर रहा हो, सेटिस्फाइंग दैट पर्टिकुलर नीड। नहीं होगा तो वहाँ हम क्या करेंगे, वी विल बी वैरायटी की मार्केटिंग होगी, वी विल ऑफर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स कैटेगरीज विद इन द सेगमेंट्स। और वहाँ चूंकि मल्टीपल छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे जो क्लियरली नज़र नहीं आ रहे, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ उन सारे वैरायटीज़ को पूरा करने की कोशिश करें। और ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि वैरायटी ऑफर करने में कंपनी की कैपेबिलिटी बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि कंपनी रेगुलरली नए वैरायटीज लॉन्च कर सके तो वैरायटी मार्केटिंग करेगा। दूसरी तरफ जैसे हमने कहा बड़ी सिलेक्टिव मार्केटिंग होती है जहां के टारगेट जो है वो भी क्लियर हो, निश हो, या उसमें आप प्रोडक्ट स्पेशलाइज कर जाएं और आपका प्रोडक्ट इतना स्पेशलाइज्ड हो कि वो मुख्तलिफ मार्केट्स में, जैसे मैंने आपको डिज़ाइन पे बताया कि प्रोडक्ट 1 है तो वो आप 2 या 3 सेगमेंट्स में मार्केट के एक साथ ऑफर कर सकते हैं। So keeping that in mind, we should be able to see that there is a logic behind the way we approach the positioning strategy, keeping in mind our need of how we will enter the target. Now, having talked about these, जो चंद चीज़ें हमने थोड़ी डिटेल में डिस्कस करनी है वो हो सकता है मैं आज कवर ना कर सकूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आई विल डू दैट। वो है टू बी वेरी क्लियर कि डिफरेंट मार्केट एनवायरनमेंट्स होते कौन से हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था इमर्जिंग मार्केट्स हैं। अब इमर्जिंग मार्केट, just as an example, because this is a strong discussion and we should be very clear as to how we will approach various areas. अब emerging market है, emerging market को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। One emerging market is based on a new segment coming about, a new technology has moved in, created a new segment, and therefore the market starts to grow. On the other side, if we look at the global frame or globalized frame में, तो वहाँ भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, बट दोज मार्केट्स आर इमर्जिंग फॉर ओल्ड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स इन दी डेवलप्ड वर्ल्ड। वहाँ से जब वो शिफ्ट करते हैं वो प्रोडक्ट्स, तो वो भी उन इमर्जिंग मार्केट्स में लाते हैं जहाँ के नीड्स अभी तक क्लियर नहीं होती, वांट्स क्लियर नहीं होते। एक तरफ नीड्स एंड वांट्स की क्लैरिटी नहीं है, दूसरी तरफ इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर टेक्नोलॉजी की प्रेफरेंस की क्लैरिटी नहीं है। ये टिपिकली आपने देखा होगा मोबाइल फोन सिस्टम्स में। अगर आप थोड़ा सा उसमें गौर से देखें तो एप्पल ओएस सॉफ्टवेयर के बेस के ऊपर अप्लाई करता है। द सेकंड वन दैट हैज मूव्ड इन नाउ इज माइक्रोसॉफ्ट, अपना एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल कर रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ मोबाइल फोन्स। एंड्रॉयड इज अनदर वन दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट वी डू नॉट नो फाइनली कौन सा प्रेफरेबल होगा।
इसी तरह जो क्या नाम है आपका मोबाइल था फ़ोन which was which has now gone out of the market, उसकी जो reputation है that has been pretty hit, वो भी मोबाइल सिस्टम था, लेकिन चूंकि प्रोप्राइटरी मोबाइल सॉफ्टवेयर के बेसिस पर वो ऑपरेट कर रहे थे, तो उनको वो प्रेफर्ड नहीं था इन द सिस्टम, एंड दैट इज व्हाई द होल कंपनी हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट इट इज बीइंग सोल्ड ऑफ। और उसको बेचने में भी जो खरीदार थे अब वो रिलक्टेंट है उसको खरीदने में, बिकॉज उनके पीछे जो आपका जो मोबाइल सिस्टम उन्होंने दिया था, वो पिक्चर्स टिपिकली द कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट इज ब्लैकबेरी, तो उनका प्रॉब्लम हो गया, प्रेफरेंस नहीं रही। अब एंड्रॉयड इज द प्रेफरेबल प्लेटफॉर्म, हाउएवर ओएस जो कि एप्पल का है वो अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग कंपैटिटिव पोजीशन को रखता है, और इस तरह से और प्लेटफॉर्म्स आते हैं। तो ये प्रेफरेंस का इशू जो है वो क्रिटिकल है in terms of technological emerging markets. But on the other side of the picture, we have Pakistan as an emerging market, India, Bangladesh, all these markets are emerging. तो वहाँ कौन से products fit करेंगे, ये एक और issue है. For example, there was a point of time when we only had window ACs, we did not have splits. Now the logic is changing and our preference is more on splits rather than windows, because technology भी change हुई, but these technologies had already existed for a long time in the developed world. It is only in countries which are emerging that these new technologies are coming in. For example, water purifying systems. कहीं दूसरे मुल्कों में this had already approached a decline stage, but in Pakistan this was an emerging market and it's still growing because we are not very clear as to how the market will finally shape out. तो एक तो different market environments की बात हम करेंगे, फिर हम उसको ही रिलेट करने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ। तो वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक मार्केट से ताल्लुक है, एक प्रोडक्ट के साथ। देन वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स दैट एग्जिस्ट। वी लुक एट द कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज दैट वी विल हैव, which will be part and parcel of the factors that influence the decision of which market to choose and how to enter, how to approach the market, and finally the logic of opportunities for competitive advantage. So keeping in mind that finally we will be looking at all these pictures, we will approach this most probably in the next session. Now at this point I will just try and recapitulate all the discussion that we have done. We had started with the logic that segmentation is there. अब issue है कि market को approach कैसे करें, target कैसे बनाएं, और उसमें we are very clear from case studies and various other research that has been done that positioning is one of the most critical success factors in the marketing strategy area. और इसका जो logic है वो STP से ही निकलता है, जिसमें segmenting, targeting और positions की बात हो रही है। हमने और ये भी जिक्र किया कि segmentation तो हो जाती है, लेकिन फिर हर segment में जो opportunity है उसकी analysis करना और उसको organizational requirements के साथ match करना is the second stage before we come to a decision as to how to enter a market. और फिर market entry strategies जो हैं वो अपनी जगह पर उनके अपने logics हैं, उनमें कुछ influencing frames आते हैं, कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पे before we take a choice, और हम जो highest growth market है उसको assume कर लें कि यही हमारी market opportunity है। उसमें competitive क्या नाम है situation, the trend, the scope, the size of the market potential, all have to be taken into consideration, both on the logic of qualitative information flow. Like I said, कि managers जो होते हैं they have to make sense of their market और make sensing जो sense making issue है, knowledge experience से ताल्लुक है, और उसमें background historical patterns are all part and parcel of the final decisions that we take in terms of deciding which market to apply. कितना रह गया यार? खत्म करने से पहले एक बात मैं जरूर कहूंगा जो आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर भूलनी नहीं चाहिए। हम नॉर्मली जब डिस्कशंस कर रहे होते हैं मार्केटिंग के हवाले से, तो वी बिकम टू इन्वॉल्व विद a point of time frame and we forget the logic that we should have constantly aware or in front of us.
और वो है वैल्यू प्रॉपोजिशंस के वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे एक सेगमेंट में। और वैल्यू का जो फ्रेम मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि कस्टमर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और वो कस्टमर वैल्यू की जो लॉजिक है वो ही सारे सिस्टम को ड्राइव करेगी। अगर आपकी वैल्यू ऑफर कंपैटिटर के वैल्यू ऑफर से कम है तो मार्केट आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। तो जब भी हम अपॉर्चुनिटीज और उसकी लॉजिक को फ्रेम करें तो हमारे जहन में ये चीज़ रहनी चाहिए कि वैल्यू कहाँ, कैसे और कब क्रिएट होगी। So keeping this in mind, I come to the conclusion of my lecture today. Like I said, in the next lecture, we will talk about the various influencers and we will go into details of it, look at certain given charts and look at some models so that we are very clear how to approach the final phase of positioning. And then we will, after having discussed this targeting area, we will move to the positioning frame where we will discuss positioning strategies including perceptual and position maps. Okay, with this I come to the conclusion of the lecture. See you next time. Allah Hafiz.